पदक को निकाल दिया जाएगा और इसे हम स्टेज पैसिवेशन भी कहते हैं. We are closer to the launch and the automatic launch sequence has been initiated. Based on the readiness of all contributing and participating systems like the launch vehicle, satellite, range, downrange tracking stations, the mission director Dr. M. Jaikumar authorizes the launch. The vehicle director then initiates the automatic launch sequence 14 minutes before T0, which is a capsule of very essential checks to verify the systems of launch vehicle. 14 minutes. Very close to the scheduled launch time, control is passed on to the onboard computers. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है. हमारे शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बायक स्थित रडार स्टेशंस इस यान पर निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे. मुख्य उपग्रह के प्रमोशन के पश्चात कक्षा की ऊंचाई 650 किलोमीटर से घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी. ऐसा चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर किया जाएगा. हम इसे सेकंड ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. इस दौरान त्रिवेंद्रम तथा शार स्थित रडार स्टेशंस भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे. PSLV C-58 पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए. यहाँ विजिटर्स गैलरी श्रीहरिकोटा में भारी संख्या में दर्शक उपलब्ध हैं. The PSLV C-58 rocket standing majestically at the first launch pad. On your screens, Secretary DOS and Chairman. PS4 activation completed. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLV C-58 FNC activation in progress. T-12 minutes. Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments and 1 head end segment. Two middle segments had been assembled, and this is the head end segment, and here's the igniter. C-58 being a DL version has 2 strap-on motors which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities where it is tilted and integrated with the core motor. These are the 2 strap-ons. The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1, and this is RCT, Reaction Control Thruster Related Systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being
integrated to the core motor, and the second stage, PS2, which is a liquid stage, is prepared in a separate assembly building being tilted. Vikas engine powers second stage of PSLV. It is being integrated with the core motor, and two stages are ready. Here, the PSLV is being transported in its semi-integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower. आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है। इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है। सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं। यह है हमारा PSLV C58 का उपग्रह एक्सपो सेट। इसमें दो मुख्य नितभार हैं जिसका नाम है एक्सस्पेक्ट और पोलिक्स। पूर्ण परीक्षित कर एक्सपो सेट को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C58 रॉकेट। यहाँ से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। Studying of celestial objects unveils several mysteries. 7 minutes. In September 2015, ISRO had launched first dedicated Indian astronomy mission called AstroSat, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical, and ultraviolet spectral bands simultaneously. One of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the AstroSat is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, XPOSat is a step ahead in the study. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy community is particularly enthused about the prospect of systematic exploration into the polarization of X-rays emitted from astronomical sources. This aspect of study is the latest emergence in observational astronomy. Earlier tools included imaging, studying the fluctuations of light from source, and spectroscopy, which is basically a study of spectrum of electromagnetic radiation emanating from celestial bodies. Earlier observations could reveal chemical composition, temperature, distance, velocity, and luminosity. Analyzing X-ray polarization signature enables measurement of deeper insights through manifestation of processes generating these X-rays having distinct signatures within appropriate energy bands, depending on the involved energetics. The XPOSat mission by ISRO is specifically designed to investigate such X-ray polarization signatures emanating from bright X-ray sources. The primary payload, polarimeter instrument in the X-rays or POLIX, operates to measure polarimetry parameters in the medium X-ray energy range of 8 to 30 kiloelectron volts photon. T-5 minutes. The first payload for this energy band. Its collimator plays a crucial role to ensure that only one bright source is within the field of view for most observations. The second payload, EXPECT, X-ray spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution
in soft X-rays, that is 0.8 to 15 kiloelectron volts energy band. अब हम उड़ान से 4 मिनट 22 सेकंड की दूरी पर। आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में परिचय देते हैं। सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स T-3 सेकंड्स पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 मिलीसेकंड के पश्चात सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे। इस समय यान का उत्थापन होगा। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रैप-ऑन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। कोर बूस्टर S-139 बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 57 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष कंप्यूटर इन फ्लाइट मोड। प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण 152 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान ऊष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। PS2 द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण, जो कि उच्च निष्पादन वाला HPS-3 चरण है, ठोस नोदक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। T-2 मिनट कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपोसेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV C-58 Exposat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S-139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All subs The stage 2 ignites all sequences after PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination.
Due to tracking जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. This is the PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the